Okay, so now if we consider an electric circuit like this is plus, minus, and here is a switch. Okay, so if current is flowing in this circuit, okay, so to measure potential difference, we have to, here is a conductor, this is the conductor, and to measure potential difference, we take here voltmeter by which we measure potential difference across these two terminals of the conductor, and to measure current, here is an ammeter. So ammeter is always connected in series, and this is always in parallel, because if ammeter is in parallel, now let us consider that this is in parallel. So if I current is flowing in this from here is I, and here is the junction, and this is I1 and this is I2, then it can measure only I1 current. And what is my purpose? That we have to calculate total amount of current. So to measure total amount of current I, we take it in सीरीज नॉट इन पैरेलल. अगर हम पैरेलल में लगाते हैं इसको, तो इसमें से कुछ ही करंट इधर जाएगी, हाफ करंट, और हाफ इधर चली जाएगी, तो उसमें जो मेज़रमेंट होगा वो हाफ होगा. तो इसलिए हम इसको इस पैरेलल नहीं लगाते. हमेशा जब भी लगाएंगे हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे. और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो करंट यहाँ से फ्लो हुई वो अमीटर से होकर के जाएगी और टोटल करंट हम मेज़र कर पाएंगे. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ये कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम इसको हमेशा पैरेलल लगाएंगे. तो एक चीज़ हम हमेशा लर्न करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल एंड अमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज. ओके, सो नाउ if we write V, this is A, and experimentally we see that when potential difference is 0, current is 0, and this is 1, this is 5, this is 2, this is 10, this is 3 and 15. And now if we plot the graph between V and A, sorry, this is potential difference and this is I, then we get graph like this, straight line. What does this graph it mean? That V and I have linear relation. So V and I have linear relation. अगर स्ट्रेट लाइन आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जिनके बीच में हमने ग्राफ बनाया है वो आपस में लीनियर रिलेशन रखते हैं. और लीनियर रिलेशन का क्या मीनिंग होता है? दैट इज़ V इज़, okay, we can write I, V is proportional to I, and this is Ohm's law, that potential difference across the conductor, or simply we call current flowing in this conductor, is directly proportional to potential difference. आप जितना ज़्यादा potential difference अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगी. इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया, ओके, और इसको मैं यहाँ पे कोई दूसरा टर्मिनल है जिसका पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, ऐसे हम कनेक्ट करते हैं, तो इसके पास हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे चार्जेस मूव करेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है. अभी हमने इसको कुछ चार्ज दिया है और इसका पोटेंशियल 100 है, तो अभी हम बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो 100 हुआ है ना. तो ये चार्ज, ये वाले चार्ज एक चार्ज को ऐसे पुश करेंगे और इनकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड से समझते हैं कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, अगर हम इस पे चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा हम बोलेंगे कि ये आपस में जो कंप्रेस्ड है, आपस में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इंक्रीज़ हो जाए, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उतना तेज़ी से ये चार्जेज इधर भागेंगे, और जितना तेज़ी से भागेंगे हम बोलेंगे वो क्या है, करंट है. तो इसमें
हम चार्जेस को बहुत तेज़ी से मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे और चार्जेस लाएंगे, और चार्ज लाने से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज़ होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, और हम बोलेंगे कि चार्जेस अब तेज़ी से भाग रहे हैं। तो अब हम ये समझ जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा हम क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी, उतना ही तेज़ी से चार्जेस मूव करेंगे। सो दिस V इज़ proportional to I, this we call Ohm's law, but temperature and other physical quantity remains unchanged. So we are write temperature and other physical quantity remains unchanged. वो इसलिए कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, तो इसमें एक वर्ड हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, जो कम ज़्यादा होता है ना। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे तो इसके लिए हम बोलेंगे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना, सेम होगा, एक उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ओके, वो कैसे होगा उसको अभी समझेंगे। नेक्स्ट, V is proportional to I, and now we drop this sign. We have to write one constant, that is V is equal to Ri, or simply we write V is equal to IR, and R is the proportionality constant. We call this is the resistance. So now resistance, unit of resistance is, simply we can write resistance is V by I. This is volt per ampere or volt per ampere, or we write ohm. Okay, is the name of scientist. So we write unit of R, resistance is ohm. Okay, so symbol is like this. Okay, now what is mean by resistance of a conductor? So okay, we are write V is equal to IR, R is equal to V by I. Okay, now let's resistance. So in any conductor, especially we call this is metal, there are positive ions and free electrons. Free electrons can move randomly, and positive ions are stationary. And when we apply electric field across this conductor, electrons are drifted, and so this we call drift velocity and current produce. कि अगर इसके दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनके लिए एक अपोजिशन होगा। वो अपोजिशन कौन है? तो ये पॉजिटिव आयंस है, कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हुआ तो ये पॉजिटिव आयंस, इसमें हमने 448 बनाए हैं, इसमें मिलियंस ऑफ पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनके रास्ते में ऐसे मैं इसको बना सकता हूँ कि यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, हमेशा स्टेशनरी हैं, खड़े हैं, तो क्या होगा, उसमें कोलिजन होगा। कोलिजन का मीनिंग अपोजिशन होगा, है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को चलने में अपोज करेंगे। ओके, इसी अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काज क्या होता है? कोलिजन। कैसा कोलिजन? ड्यू टू बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, इनके बीच में जो कोलिजन्स होते हैं उनके वजह से अपोजिशन होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो रेजिस्टेंस इज द opposition of path of electron inside the metal due to the collision of positive ions. Okay, now resistance of a conductor is depends on length. ओके, जितना ज़्यादा हम कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा कोलिजन होगा।
क्लियर, छोटा कंडक्टर है तो उसमें कोलिजन कम होगा, पॉजिटिव आयंस कम है, इसकी लेंथ हम इंक्रीज कर देते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, तो अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है किसी कंडक्टर का, इसमें कोलिजन्स हो रहे हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो इनको अब ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि अब इसमें कोलिजन कम होगा। कोलिजन कम होगा मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा। तो एक चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए हम इसमें जो रिलेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और हम रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चलने पे एक रिस्क तो होता है हमेशा एक्सीडेंट का, कि कहीं कोलिजन ना हो जाए। तो अगर यहाँ से हमारी कार चली, ओके, यहाँ से हमारी कार चलती है ऐसे, तो कुछ पॉसिबिलिटी होती है कोलिजन होता है, कि ये में भी कोलिजन हो जाए, और होता भी है रोड पे, आप देखते हैं। तो अगर आपको 200 या फिर 20 किलोमीटर चलना है, तब की पॉसिबिलिटी कोलिजन की, और इसको इंक्रीज़ करके मैं 50 कर दूं, तो क्या बोलूँगा कि 50 किलोमीटर मैं जाऊंगा उसी रोड पे, उतना ही चौड़ा है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें हम बोलेंगे कि लेंथ इतना है तब तो ठीक है, हो सकता है कोलिजन ना हो, लेकिन लेंथ बढ़ा दिया, दूर जाना है तो रिस्की हो जाता है ना। तो जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हमारे लिए रिस्की होता है कि हाँ कहीं कोलिजन ना हो जाए, उसको हम इसमें फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अगर ये रोड है, और तो एक चीज़ तो हम समझ रहे हैं कि लेंथ इंक्रीज़ कर देने से कोलिजन बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एरिया इंक्रीज़ कर देंगे, पहले आप इतने चौड़े रोड पे चल रहे थे और इसका जो चौड़ाई है इसको हमने इतना कर दिया, तो अब कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। तो अब हम बोलेंगे अब रोड चौड़ा होगा, इजीली हम जाएंगे, अब कोलिजन की पॉसिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अब आप इजीली चल सकते हैं, आपको ब्रेक वगैरह अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया बढ़ा देने से हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए हम आई इज़ प्रोपोर्शनल टू एल लिखते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हैं। ओके, so now we can write by combining these two equations. This is L by A, and again if we drop the proportionality sign, we write here another constant, that is rho, and rho is called resistivity. So resistivity is resistivity rho is equal to, we can write RA upon L. RA upon L. So unit is R for ohm, this is meter square upon length meter, this is ohm meter. So unit of resistivity is ohm meter. Okay, so now you have to make some definitions, that is R is equal to V by I. What does it mean by 1 ohm resistance? First, 1 ohm resistance. So now the potential difference across the terminal is 1 volt, and current flowing in the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. So if V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, the potential difference is 1 and current flowing in the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. Okay, now again we write resistivity rho is equal to RA upon L. Now let us say a conductor
having the length 1 meter and area of cross section is 1. So this we call cube. So this length is 1 meter, and this is 1 meter, and this is 1 meter. Then what we call area of cross section of this cube is 1 meter square and length is 1 meter. So this is the conductor having the length 1 and area of cross section is 1. So for this particular sample, if L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter, or then rho is equal to R. So resistivity is equal to the resistance. Resistivity is equal to the resistance when L is equal to length of conductor is 1 meter and area of conductor is 1 meter square. Okay, so resistivity is basically equal to resistance, but when L is 1 and area is 1. So resistivity for any material remains constant, because अगर मैं बोलता हूँ कि एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो रेजिस्टिविटी का क्या मीनिंग कि हम उसका डायमेंशन 111 रखेंगे और उसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये मीनिंग होगा रेजिस्टिविटी का। तो जब भी हम एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी बोलेंगे, इसका मतलब उसका हमने एक कंडक्टर बनाया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है और लेंथ 1 है। तो जब भी उसमें आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस एल और ए पे डिपेंड करता है, एल और ए पे। एल और ए अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, और जब भी हम रेजिस्टिविटी इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो एल और ए चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा हम 1 रख रहे हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस, तो अगर एल्युमिनियम का रॉड है और उसका लेंथ अभी इतना है, इसके लिए रेजिस्टेंस अलग होगा, इंक्रीज कर देंगे, अभी भी एल्युमिनियम है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो एक चीज़ हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। कोई एक मटेरियल लीजिए, उसका लेंथ चेंज कर दीजिए, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का चेंज कर दीजिए, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। ये चीज़ें हमें समझनी है। ओके, नाउ next is the proof of Ohm's law. So, now we know we write here basically this is R is equal to V by I and rho is equal to R A by L. Okay, so this is not R is equal to L by A. Okay, so now proof of Ohm's law. So we know the expression for drift velocity and the relation between electric current and drift velocity. So we write here I is equal to NEA VD. NEA VD is basically the charge on electron, and we have to write minus, and if we take only magnitude, then we can write NEA VD. Okay, so now this is also Vd is equal to E by m tau. This is the formula for drift velocity. Now if we put this value in this equation here, this is Vd, then we get I is equal to Ne square E A. Okay, this is NEA by this is E by m tau. So this is I is equal to Ne square A E tau by m. Okay, and we know the relation between
electric field and potential, that E is equal to V by L, or V is equal to E into L. So now if we write E is equal to V by L in this expression, we get I is equal to NE square A tau V by ml, and we can write this expression as V is equal to ml upon Ne square A tau, and this is I. Okay, so this is the expression. Now for a particular sample, length and A are constant. So L and A are constant for a sample. Now at constant temperature, हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने बोला at constant temperature. So at constant temperature, tau remains constant. Tau is constant at constant temperature. Okay. E for charge on electron, and this is also constant, and mass of electron also constant, and n for the density. So for a particular material, density of charge also remains constant. So n is constant for a particular material. तो ये सभी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, लेकिन हमें ये याद रखना है कि एल और ए जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, फॉर द सैंपल अगर चेंज नहीं करते हैं तो ए और एल ये दोनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होते हैं. अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होता है. इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, अगर टी को कांस्टेंट नहीं करते हैं तो भी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई नहीं आएगा, है ना. ओके, तो अभी हमने देखा कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो अब मैं लिख सकता हूँ V इज़ प्रोपोर्शनल टू I व्हेन सैंपल शुड नॉट बी चेंज, relaxation time not change, it means temperature is constant, and material for a particular material. अगर एक बार हमने एल्यूमिनियम का वायर लगाया, उसके लिए डाटा लिखा, ओम्स लॉ बनाया, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I देखा, अगर उसको हम चेंज कर देंगे तो हो सकता है ना आए, है ना. तो इसमें आपका जो मटेरियल है वो सेम होना चाहिए, सैंपल सेम होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके हम लिख सकते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, विच इज़ ओम्स लॉ. एंड this is R basically, so we can write R is ml upon Ne square A tau, Ne square A tau. So this is the derivation of Ohm's law. So next is the conductance. तो एक वर्ड हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस. इसका मतलब कि कितना उसमें रेजिस्टेंस होता है करंट को फ्लो होने के लिए, चार्जेस को मूव होने के लिए. जो उसमें अपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं कि वो रेजिस्टेंस है. इसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे कि कितने चार्जेस इजीली मूव कर रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं. सो कंडक्टेंस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ resistance. Reciprocal of resistance is called conductance. So for conductance we write G. Okay, G is 1 by R. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगी. जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी. क्लियर? सो वी राइट रेसिप्रोकल. सो दिस इज द कंडक्टेंस. वी राइट हियर G is equal to 1 by R. Okay, so unit is ohm inverse.
Okay, next is the conductivity. Conductivity. So similarly, the reciprocal of resistivity is the conductivity, and conductivity is 1 by रो. इसी पर्टिकुलर सैंपल के लिए रो की वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी. इसको हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी. सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज द कंडक्टेंस, एंड सिमिलर वे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज द कंडक्टिविटी. एंड वी नो for this is ohm, this is meter. This is the unit of conductivity. So conductivity is 1 by rho. Okay, next term is the mobility. Mobility. So in drift velocity we see that when electric field is applied across the metal, across the conductor, electrons are drifted and it makes electric current. Drift electron makes electric current. So if here is the plate, okay, and here is the electron which is moving, and if this is drift like this, so this is the drift basically. ओके तो ये जो ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है. अगर हमने यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल लिया है, इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि ड्रिफ्ट इतना है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है. एक दूसरा सैंपल लेता हूँ, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ इसमें जो ड्रिफ्ट है पहले से ज़्यादा हो गया है ना. तो ये जो ड्रिफ्ट है ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है. तो ये जो ड्रिफ्ट होना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी. ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मोबिलिटी. तो इस मोबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस मोबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये बोला कि इसमें जो ड्रिफ्ट हुआ वो हुआ वी डी. ड्रिफ्ट होने से इसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई वी डी 1 और इसमें हो गई वी डी 2. तो किस में ज़्यादा ड्रिफ्ट हुआ या फिर किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ने या फिर चार्जेस ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसके लिए हम दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और फिर देखेंगे किस में वी डी की वैल्यू ज़्यादा है. तो इसमें हम देख रहे हैं वी डी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा मोबाइल कर सकता है, ज़्यादा चल सकता है. क्लियर? अच्छा, अब इसकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी कि ये सैंपल के लिए आप कैलकुलेशन करिए, तो इसके लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है सपोज वी डी, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी वी डी अपॉन ई. तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो रही है. इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है, और उसी से हम समझ जाएंगे कि उसकी मोबिलिटी कितनी है ना. ये वैल्यू अगर ज़्यादा आती है मीन्स मोबिलिटी ज़्यादा है, ये वैल्यू कम आती है मोबिलिटी कम है. तो सिंपली हम मोबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे वी डी अपॉन ई. Okay, so Vd upon E is the mobility, and symbol for mobility is basically mu is Vd upon E. Okay, so E is basically force upon charge. So now if you have to write unit, so this is meter per second upon this is Newton per coulomb. So this is Newton per coulomb. So this is the unit of mobility. This is meter per second, Newton and coulomb. So this is M. Now we have to write the dimension.
of mobility. So to write this dimension, we can write this expression as m c upon s and n, the meter coulomb second Newton. So dimension of mu is, this is basically L, and this is coulomb is AT upon T. Okay, so this is L, this is AT upon, this is second is T, and this is MLT minus 2. So LL cancel, TT cancel, so this is M minus 1 A T square, M minus 1 A T square. So we can check once again, this is AT, this is T, and this is MLT. So M minus 1 T square, and this is A. Okay, so this is the dimension of mobility. Now the next topic is vector form of Ohm's law. So vector form of Ohm's law. So there are certain relations that we know, that I is equal to N E A V D, and VD is equal to E by M tau, and again current density J is equal to I by A. Current density is I by A. So from 1, this is 2, and this is 3. So this is from 1 and 3, J is equal to, this is I and this is N E A V D. Okay, sorry, A is cancelled, so N E V D. Okay, if now we put the value of V D is here, then we can get, using equation 2, we get J is equal to NE, and VD is EE by M tau. So this J is equal to NE square E tau by M. So this is basically J. Okay, so J is equal to NE square by M tau into E. So this is the expression for current density, but NE square tau by M is basically 1 by rho. So this is J is equal to, we can write here NE square tau by M is equal to 1 by rho, because we write here R is equal to ML upon 1 ML upon NE square tau A, NE square tau A, and we know that R is basically rho L upon A. So rho is equal to RA upon L, and if we write R is this, then this is ML upon NE square tau A.
So L cancel, A cancel. So this is rho is equal to m upon ne square tau, and 1 by rho is equal to ne square tau by m. So for this we can write 1 by rho. So J is equal to 1 by rho into E. So E is equal to rho into J, and this is the vector quantity and this is the vector quantity. Okay, so this is the expression for Ohm's law in vector form. Now again we know that conductivity is 1 by rho. Again conductivity is 1 by rho, so this is 1 by rho is sigma, this we call conductivity. So for this we can write sigma, then this expression will be written as J is equal to sigma. This is the vector form of Ohm's law. Okay, so that's all about this. Thank you.